Hello and welcome back to Chasing the Target. We had plenty of cricket action today. We can see a bit one-sided cricket action. New Zealand winning the series. Today's game, they almost beat India because, just before the Duckworth Lewis could have been applied, the rain came in and washed away the game. That meant it was a tight game, and New Zealand won the series 1-0. Australia dominated West Indies on day one of the Perth Test match. Marnus Masterclass special, scoring 100, and he's still there, not out with Steve Smith, who scored a 50. I have with me Mr. Faisal. How are you doing, bro? I'm doing good. It's been a good day of cricket. Almost not for India, but at least with the likes of Labuschagne and Smith and Khwaja, which I picked. It's been a good fantasy kind of way. Also, it's been good for me. But hopefully, we get to see more. Abhi India ka to khair ho gaya series. I mean, it's just one to forget about, I guess. We'll But discuss yeah, that. yep. We will discuss that. I have Sports Entertainment saying hello. Thank you so much for joining us. Please, feel free to ask your questions. जो भी सवाल है आप comment section में लिख सकते हैं, and make sure you like and subscribe to the channel. Thank you so much for joining us. Really appreciate it. Also, first, congratulations. We reached 100 subscribers, a mini milestone. We just started a month ago, but every milestone is a big one, and we'll celebrate it. And congratulations to you. Congratulations to Abrar, Don Aziz. Congratulations to Rayan. Ashish, Vinay, Punter, everybody who's joined us throughout since we started. Yep. And main congratulations to you for starting it individually, mostly giving us the confidence to be able to come and speak. इधर इतना आसान नहीं रहता ये सब content बनाना, सोचना और करना. I know कितना tension की बात है. I just hope कि आज 100 है, इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने में 1000 celebrate करेंगे. And we just really love the game. And we love you, so hopefully we can get more content and Thank you, use thank our you. It's a team effort, including you and everybody else have put in a lot of effort. You guys have done the hard yards, and I'm there for the vibes, baby. So let's talk about a bit of today's games. Let's start off with India and our first segment. I think we'll go into our first segment, which is the eye test, and we can discuss from there. So what caught my eye today, you could have put this in fresh off the press because it's news also, but what caught my eye today was Harsha Bhogle's interview with Rishabh Pant, and it went viral on social media. I don't know if you saw it, Fez, but basically Harsha Bhogle was interviewing him, just asking about the difference in form between red ball, white ball. He hasn't been as great. So his Pant said, "No, nahi उतना बुरा नहीं है मेरा record white ball में." Stuff. He's like, "नहीं बुरा नहीं, मगर थोड़ा difference है." He's like, "नहीं मैं तो 24-25 का हूँ, मैं difference नहीं देखता हूँ." And he's basically some people are saying arrogant, some people are saying he shouldn't have replied like that. Harsha Bhogle is a respected journalist, but end of the day, he's just someone under pressure, and it came out like that. And he will learn from it. He will learn that these things will happen. He'll have to handle the questions better as a player. But of course, it's clear that he's under the pump. आज भी उन्हें 2 अच्छे boundaries मार के out हो गया. I mean, ऋषभ पंत का देखो भाई ठीक है 24-25 का है, but I think अभी तक he has played a fair enough cricket to understand how the media works, and I think वो थोड़ा pressure अभी recently जो उनके साथ हुआ है with regards to a certain someone, I think वो भी came crashing down on him and all those questions and everything. He's just frustrated and he needs a break. खुला छुट्टी देना, उसको गोवा छोड़ देना, गोवा में वाइल्ड हो जाओ, जाके कुछ तो भी कर लो. ऐसा I think एक छुट्टी होने का है उसको. Yeah, so I think he just needs a break. और वो समझ रहा नहीं है अभी. I think he's not able to understand कि भाई छुट्टी की अहमियत क्या है, what's the importance of holiday. Mind fresh होता है, एक आपका perspective change होता है. You sort of go ahead and see your own matches and you realize. I think that realization is not hitting him yet. Thoda time lagega for him to mature up, hopefully, and I'm pretty sure. I know you're the one only. Apart from me, I don't back him much, but you back him a lot, and I know you're itna knowledge rakhta hai cricket mein, so I can certainly understand your backing, and he has it in him. He has the flair, but it'll take time for him to sort it out. Yeah. I mean, 100%. I back him, but at the same time, today, he should have handled the interview better. मतलब उनका job है पूछने सवाला, you don't need to take it इतना दिल पे इतना. वो I understand where he's coming from, but still, I think he has to present himself better. And also, भाई form नहीं है तो the management has to take the call. It's not in Rishabh Pant's hands whether he plays or not. It's the management, so they have to take the call. They should give him a break. They should play someone like a Sanju Samson, who everybody is dying for him to play. Give him a chance, and that would also
help Pant, because he'll be out of this pressure, because now every time there's a post about Sanju Samson, the person who feels the pressure is Rishabh Pant. So like, to get rid of all this, give him a break, drop him from the limited overs for now, and let Samson play, and then take it from there. He's still an amazing red ball player, and we saw that in red ball also. उन्हें break लिया, Saha को लेके आए थे, then he came back and smashed it in red ball. He had a great test year in that COVID period. He had a great year as a test cricketer, Rishabh Pant. So I think this something similar that he has to do: take a break and then take it from there. Also, yeah, sorry, you want to say something? No, no, I was just agreeing with you. I just going to take some time for him to get. I think once it होता है ना कि आप जब गिरते हो आपको मालूम है कि कितना आपको injury हुई है और कितना लगता है. The next time you'll be cautious of the thing. So I think it's that part of his career where he's in a downhill kind of a road, and he's going to realize this, that all the mistakes he's making right now. आगे जाके he learn from it and probably not fall in that same hole again. तो I think वो होता है कि जब आगे वाला गिरता है पिछले वाला होशियार बोलते हैं. तो I think वैसा है कि when the guy who's in front of you fall, then you'll be a little bit more attentive to that. Rishabh Pant is young, so सीख जाएगा बच्चा with time. Yep, and अगर देखे match, so India again got off to a decent start. They were like 40-50 for no loss, but then the likes of Dhawan, Gill, they got out, they got dismissed. Pant got dismissed. Surya Kumar also, Deepak Huda, everyone got dismissed. Apart from Iyer and Washington Sundar, there was no valuable contribution. And again, giving catches into the outfield, getting to starts, not capitalizing, not finding the gaps, rotating the strike. I felt both Dhawan and Gill should have rotated the strike a bit better. But even then, it's a 50 over game. That's fine. They took their time. Don't give your wicket away like that. Dhawan coming inside edge, trying to play across the line. Same thing with Shreyas Iyer. Again, leg side giving catch. He's giving too many catches. He has a lot of talent. He's not getting out because of technique or anything. He's getting out by gifting his wicket. And that you cannot do. Like, no matter what series you're playing, if you get out to a good ball, or if you have a weakness, like, Shreyas Iyer has a problem with the short ball, that's fine. But here, don't gift your wicket away. Yeah, and something else that I noticed, like you have been talking about this recently a lot, कि run rate, batsman का run rate जो है, it's been very slow. Again, अगर आप look at the innings and their scores, Dhawan took like 45 balls to make a 28, and 13 of 22. ऐसा मतलब बहुत slow है cricket. I mean, चलो 50-50 है, I get it. थोड़ा punch it up a notch. थोड़ा बहुत डालो, engine में oil डालो, थोड़ा गर्म हो, थोड़ा एक आध gap British ढूंढो. one should maybe become a bit more aggressive and make use of the power play. Because दोनों आजकल का जमाना 300-400 भी मतलब chase हो सकते हैं. So that's why you have to be a bit more aggressive. Yeah, and like what you've been recently marketing basketball अगर शुरू कर दिए मार and not like test cricket ball in one day में अगर शुरू कर दिए सब T20 का माल अगर शुरू हो गया इसमें, तो आप नहीं बोल सकते 500 भी चल जाएगा एक आध दिन. You don't know, Yeah. वो दिन दूर नहीं है. इस तरह से आजकल के boys है. तो I mean it's too slow, बहुत slow cricket है, बहुत ज़्यादा देखने में भी मजा नहीं आ रहा. थोड़ा बहुत एक अच्छा cover drive, एक अच्छा ये मारो. तो देखते हैं in the future what happens. Sumesh bhai Uh, in the house. Umesh Bansal, thank you so much for joining us. Really appreciate it, bro. Make sure you like and subscribe and get in your questions. Really appreciate it. Don't you think he's eating chances of young, prominent talents like Samson, Gaikwad, etc.? See, the thing is, these guys have also got chances. It's not like they haven't got chances. Samson has got a chance. You could say that maybe he should get a longer chance. But there was a period, I think it was 2021, where Samson was traveling with the team. He did play a few games, I think 7, 8 to 10 games on the stretch. Now, people are calling for his voice again, calling for Samson again, because Pant is not performing. Yes, I feel that it should be a straight swap. Eating the chance, I'm not sure. Like right now, it's been a few games. It's been one tour. He's not worked. Drop the thing which disturbs me is that Samson is not in the Bangladesh tour. Then yes, you can say that, like, that's not like, I don't think that should have happened. Samson should be in the Bangladesh tour. He should be in the squad. He should be in the 11. But one tour, I don't think he's eating anyone's chance like that. Rishabh Pant, look, you giving him a run because you backed him as a wicket-keeping batsman. You want him to perform. He's done things for you in the past, so you're giving him that long rope. And then yes, you have to take a call. You have to cut that rope for a while and give him a break and just drop him from the team and give someone else a chance. I think fair enough. But the fact that Samson is not there in the next tour, that's kind of surprising for me. Also, look, we say that Samson also, when he's given the chance, he has to grab it with both hands, because previously when he was given a chance, he didn't take it with both hands. So there is something that the selectors are looking at. We don't know exactly, but yeah, right now the popular conjecture is that Sanju Samson should play. Whether in Qatar, in Dubai, in Kerala, everybody is saying that Sanju Samson should play.
Yeah, मतलब मैं भी एग्री करता हूँ कि भाई संजू सैमसन should play and he should grab the opportunity, but I think with the likes of ऋषभ पंत, संजू सैमसन, I think यही दिमाग में है कि there is so much competition, इतना कंपटीशन है दोनों में कि लाइक नॉट दोनों में, और कंपटीशन अगर अपन लेंगे, दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं लाइक जैसे अगर रिद्धिमान शाह को ले लिए, इसको ले लिए, तो वो टेंशन की वजह से भी आई थिंक वो लोग सेफ खेलना चाहते हैं, विच अल्टीमेटली हिंडर्स देयर ओन ग्रोथ, बट या आई फील के सैमसन शुड बी देयर। पंत को बहुत ज्यादा चांस दे दिया। आई एग्री विद सुमेश भाई, सुमेश भाई, आई एम विथ यू ऑन दिस बिकॉज आई डोंट नॉट लाइक पंत, बट आई सीन एनफ ऑफ हिम टू अंडरस्टैंड के भाई इसमें अभी वो खूबी नहीं है कि एक कंप्लीट क्रिकेटर नहीं बना है अभी मेरे लिए, तो एटलीस्ट ही नॉट बीन अ कंप्लीट क्रिकेटर। यस, ही हैज गिवन अस अ फ्यू हिस्टोरिक विंस, थोड़े बहुत जगह उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, ही इज प्लेइंग टू मच क्रिकेट फॉर हिमसेल्फ, एंड दैट इज ऑब्वियसली ईटिंग अप, तो नहीं बोलूंगा, बट इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू क्रिएट अ Yeah, माहौल now जहाँ पे आप definitely you have to give Samson a chance now. I think for sure. He's saying, my brother, please check the stats. How games they got both in 2021. Basically, you're saying that Pant got way more games, and that's true. Like I'm not arguing with you over there. But what I'm trying to say is that. Initially, Rishabh Pant, what he did in the Test arena, even in that one-day series against England, the way he won that game, and in particular instances, his match-winning contributions has given him a long rope. That's why they've given him more chance. And even if you see the IPL, both have not really impressed to that level. To be very honest with you, both Pant and Samson have not. Samson gives you one amazing innings per season, but then again inconsistent. Uske baad. So they both haven't really given that. Like Surya Kumar Yadav, the way he's been consistent in the IPL, the way he scored, no one's really breaking down the door like that. But yeah, now it's time to give Samson a chance and see how it goes. But to say that Samson has been going crazy, killing it, that's also not true, right? If you look at the stats, even if you look at his IPL stats, he's not killing it. He's playing well. He's an extremely good talent, but he hasn't reached that his own peak yet. yeah. But yeah, again, Bangladesh will be interesting. I mean, will Rishabh Pant play उसको or Ishan वो Kishan? तो Ishan टू मच कर रहे भाई, टू मच कर दे बांग्लादेश, कैसा नहीं लेके जाते उसको। और ईशान किशन को लेके गया, not सैमसन, so I mean that's going to be a वो तो टू question मच of है भाई। thought. अब आई थिंक अगर इन्हें आईपीएल में परफॉर्म करा फिर भी वर्ल्ड कप में नहीं लिए, तो फिर एक और इशू हो जाएगा। सो आई थिंक ये चीज, आई थिंक, आई डोंट नो कौन डिसीजन ले रहा है, इज इट राहुल द्रविड़, इज इट वीवीएस लक्ष्मण, इज इट द मैनेजमेंट एंड द प्लेयर्स आर सर्टेनली नॉट इन सिंक। अब देखो तुम, ये बांग्लादेश के टूर में, इफ यू सी द टीम, ऑल द बिग बॉयज आर बैक, विराट इज बैक, KL Rahul is back. I don't know how he's back, but he's back. And there are a few people who are getting chance, like Umesh Yadav, I think test squad में आ गया। तो I mean, अगर आप क्या basis पे आपका assessment है, what is the criteria for your selection, I think that should be a bit more clear in their own mind, which is not clearly। जो अच्छा दिख रहा, जो fashion में, I think उसको ले रहे, अगर crowd pulling वाली लोगों के ले रहे आप, जैसे ऋषभ पंत है, the crowd puller maybe, I don't know what, but I think the criteria of selection needs to be sorted out. Yeah, no, 100%. And I think he has won us only a couple of test matches 800 days ago. They're giving him rum in T20s and ODs. Yeah, but the thing is, the way he won that test match, nobody could have won it. Like, that's just what I feel. I don't think anybody could have It's won it. there. I mean, I'm with you again, Sumesh bhai. I'm with you on this because see that test match is 800 days ago. Mashallah, your memory is crazy. But मैं agree करता हूँ भाई, वो इतिहास हो गया, वो हो गया, लगान भी इतिहास था, ये भी इतिहास हो गया। Move on. It's a new day. मगर उसका मैं आपको फ्लिप साइड बताता हूँ उसका, राइट। अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसको चेंज कर देना चाहिए, मगर ये जो लॉन्ग रोप दिए उसको, अगर नहीं दिए, लोग बोलते थे कि भाई यू नॉट बैकिंग योर प्लेयर्स, यू नॉट गिविंग देम अ लॉन्ग रोप, ही इज अ मैच विनर फॉर यू, यू नॉट डूइंग दैट, यू नॉट डूइंग दिस। So अब सैमसन का यही होगा। अब सैमसन, if he's also that kind of player, if he gets you 100 and then he doesn't score, his average will stay 50-60 plus. His average will be amazing, but then will you Amazing. back him like that? Will it be the same? अब सवाल ये देखो भाई, अब एक सवाल मेरे को ये है कि भाई, like if you put Rishabh Pant and Sanju Samson right here, right? Um, who's got the more opportunity in with the both consistently, right? Consistently किसको मिला भाई? ऋषभ पंत। कंसिस्टेंटली ऋषभ पंत को मिला। अगर सैमसंग को उतनी अपॉर्चुनिटी मिलती, अब सवाल यह था कि भाई सैमसंग को उतनी अपॉर्चुनिटी आप दे के तो देखो। आप वैसे उसने एक आध 50 मारा मगर था, वो फिर एक बार उतना नहीं दिए जितना ऋषभ पंत को, उतना मगर इसको भी नहीं नहीं। दिए, मगर देंगे उसको, 100% देंगे। कहाँ यहाँ पे बांग्लादेश को नहीं दे रहे तो कहाँ देंगे नहीं, भाई? वही तो that क्वेश्चन है। I also agree, but they will give. And Listen, see, if you take three people on the rope, I'm going to take three. I was taking two. I'm going to take Rishabh Pant, Ishan Kishan, and Sanju Samson.
इन तीनों में मोस्ट लीस्ट अगर आप देखें संजू सैमसन इज खेला है व्हेन कंपेयर टू ईशान किशन, इवन ईशान किशन आई एम सेइंग, ईशान किशन केम आफ्टर संजू सैमसन. Isn't that sad to see? Yeah, look, I agree with that. I'm not denying that. I'm saying that he should be in that Bangladesh thing. But also, who is the one who's the coach? Is Rahul Dravid? Rahul Dravid knows Sanju Samson for so long. He's worked under Dravid for so many years. So if Dravid is taking that call, I don't know why he's taking that call. But he's the only one who can explain to you why Sanju Samson hasn't played. He's the only one. I cannot explain to you. You cannot explain to me. द्राविड अपने खुद के जॉब का नहीं समझा पा रहा आजकल यार, उसको कुछ नहीं मालूम क्या बिठा रहे उसको. वही है, that's why people are getting surprised कि भाई राहुल द्रविड़ जो है, he's the one who has groomed this guy and he's not giving the chance. And why isn't he? We can't give you the chance. We can't give you the explanation. And listen, at the end of the day, performances will speak. He's not gonna get a longer run. Yes, Bangladesh में शायद नहीं होगा ये. This is the same thing which happened to Surya Kumar Yadav. Same thing. Manish Pandey को कितना खिलाए. तुम ही देखो 2020 to 21 period. सब बोले भाई क्यों खिला रहे इसको, क्यों खिला रहे. But then Surya got his chance, right? He got it at 30-31. Sanju Samson is still 26-27. With Surya was more injustice. But you should, I mean, from the Indian management को क्वेश्चन करना पड़ेगा फिर. इंडियन मैनेजमेंट को क्वेश्चन करना पड़ेगा भाई. You got to learn from your mistakes भाई. मनीष पांडे was अभी तक लोग उम्मीद मान के बैठे मनीष आएगा. कितना खेला भाई मनीष पांडे. ऑस्ट्रेलिया को भी टूर करा, इधर गया उधर गया. He was going everywhere with the team. He was playing also. And Surya Kumar who was breaking down the door. उसका परफॉर्मेंस तो सैमसन से डबल था, राइट? अभी जो सैमसन का परफॉर्मेंस है सूर्या का डबल था उससे, फिर भी उसको चांस नहीं मिल रहा था. तो लेकिन अब एक बंदे का तो चांस बनता है ना. आई एम हैप्पी टू सी हिम इन द ओडीआई स्क्वाड. एंड आज भी अगर आई टेस्ट में अगर अपन लिए तो मिस्टर वॉशिंगटन डीसी, मिस्टर वॉशिंगटन सुंदर एक और 50 मार चुका है बंदा. आई थिंक ही इज grooming up to be an amazing batsman, man. I think बस ये ना हो कि तो इरफान पठान के साथ हुआ तो उसके साथ ना हो कि भाई बैटिंग में ही पूरे घुस जाए. बट वही है, थोड़ा उन्हें स्पिन पे अगर लाइक उस पे भी काम कर सकता है, it'll be great. But man, he's a great batsman. He also opens the batting domestically as well. He's a proper batsman. It's not like he slogs or anything like that. Proper cricketing shots है, and he'll be a great all-rounder in test matches also for sure. Washington Sundar. I can't wait to like आपको दिल दे रहे हो. I love you guys. Love you too, bro. Thanks for joining. आपके सवाल पूछ सकते हैं आप comment section में. यहाँ पे आगे if Kohli wants to play 2024, then Kohli open, Ishan or Gill, Sky, Sanju, Pant, Hardik, Washington, Deepak, Umran, Arsh, Bumrah, Bishno, Yuzi. And I honestly like this is way in the future still. That I know that time flies like this, but first they're going to focus on the 50 overs. Once they do that, then of course they will look at the T20s, and that's not a bad team. But let's see what happens. Form will change. People's actual form and the way personal injuries, injuries है, form है, exactly. Injuries है. कोई IPL में कोई नया आ जाता, under 19 का कोई आ सकता. So it's still time for that. But it's a good team that you picked over there. Good job, bro. मैं तो द्राविड को मेल कर दूंगा अभी. द्राविड को. So whoever Sanju Samson fans, I just say just be patient. He'll get his chance. Don't worry, and hopefully he'll do well. He's an extremely talented player. There's nothing wrong in that. But yeah, I'm telling you. Imagine, अब देखो ऋषभ पंत आप जो बोल रहे 800 दिन पहले उन्हें मारा था. मनीष पांडे क्या कर मनीष पांडे को आई डोंट थिंक इतने भी लोग बैक करे थे. बस मैनेजमेंट जो बैक करा था. लाइक अगर व्यूअर्स का अगर टीम का अभी ये क्या है, ये बहुत आउटराइट दिख के आ रहा है. मनीष पांडे का मे बी इट वाज लाइक अ टाइम वेयर पीपल डिडंट इतना दिख के आ रहा है बिकॉज़ उसके कल्ट फैंस बहुत थे सैमसन के. मगर सूर्या कुमार का भी वही प्रॉब्लम था. और मनीष पांडे का क्या था, एक फॉर्मेट था. मनीष पांडे का एक ही फॉर्मेट था. इन्हें तीन फॉर्मेट क्या था. कौन ऋषभ पंत बोल रहे हैं? ऋषभ पंत या ही इज प्लेइंग टेस्ट, ओडीआई एंड टी20. मनीष पांडे खाली ओडीआई में था ना. बट मनीष पांडे का नहीं बनता था वो भी फॉर्मेट, जो भी सिंगल या डबल फॉर्मेट का 1 T20. वो तो एग्रीड है सब. आई थिंक एवरीवन इज गोना एग्री विद दैट. बट द पॉइंट इज यहां 3:1 का फॉर्मेट है. यहां पे भाई बंदा इंटरव्यू भी सही नहीं दे रहा. Yeah, so he shouldn't have said that. Yeah, but I mean, but I guess that I want to talk about is Mr. Matt Henry in this game. I think, he didn't pick up the wickets, bro, but 10 overs, 2 maidens, 29 runs. He stifled the opposition, stifled the Indian batsmen, and he created pressure for the other bowlers to come in and pick up wickets. If you see, Dale Mitchell picked up 3 wickets. Tim Sadhi picked up 2 wickets. India have been criticized for giving wickets to part-time bowlers. Dale Mitchell, you might consider him as a part-time bowler. So that's something that India will need to clearly improve on. And there is a weakness for them. Remember, even Moeen Ali used to come and pick up wickets against India. But Matt Henry is the guy I want to talk about because at
very disciplined, line and length, and a lot of talk about Trent Bolt and everything like that. There was no what's it called? No, Ferguson was there, but they had a good lineup without Bolt. But Henry was in the target zone. Like, will he be able to live up to that expectation? But he's bowled really well in this series, and credit to him for building the pressure today again. Yeah. Even Darren Mitchell, man, he got 3 wickets, 25 हाँ, वो runs, बोला 7 overs. पार्ट टाइमर ब्रो, मैं वही तो बोल रहा हूँ. हाँ नहीं मतलब वही बोल रहा हूँ मैं कि भाई पार्ट टाइमर है आजकल अपने को लग दे रहे फुल टाइम. वही बोल रहा हूँ. मगर फुल टाइम. और Faz, the most entertaining batsman, just in terms of stump mic, not in terms of actual batting, maybe. Mr. Marnus Masterclass, no run, waiting. It's too good, man. आज की Man, innings तो भाई. Bro, Brian Lara said something today, and I completely agreed with that. But I don't know how the Australian audience took it. But he said that this guy is a very lucky guy, Marnus Labuschagne, but he makes the most of his luck. Today, I don't think he got any clear-cut chances. But whenever I've seen him score hundreds, उसको drop chance मिलता है यार, miss run out या कुछ ना कुछ LBW call shady रहता, and he always gets a chance. But today, I think it was much. चक दे इंडिया में एक डायलॉग, चक दे इंडिया की पिक्चर में एक डायलॉग है भाई, अच्छे प्लेयर की किस्मत ही अच्छी होती है. अच्छे प्लेयर की किस्मत अच्छी होती है. आई थिंक Labuschagne ऐसा प्लेयर है कि भाई ही इज इवन गुड टू वॉच टू बैट मैन. ही प्लेज ब्रिलियंट शॉट क्रिस्प ऑफ द बैट, मिडल अच्छा ढूंढता, स्वीट स्पॉट. तो इसकी किस्मत में है कि भाई सेंचुरी बनाना है, तो आई थिंक वो है. मगर आज जो ना बेहतरीन खेला, मतलब फ्रंट फुट पे, बैक फुट पे, ही लीव्स द बॉल वेल एज वेल. स्पिनर के अगेंस्ट, हिम, स्मिथ, इवन ख्वाजा टुडे, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द वे दे यूज देयर फीट एंड दे मेड Roshan Chase drag the ball short, and फिर उन लोग बैकवर्ड में लेके पुल्ला मार रहे थे. So I think the way they handled the bowlers was outstanding. Of course, it was a great pitch to bat on. I'm not denying that, and they made the most of it, make hay while the sun shines. But bro, if I'm the opposition, that's the two batsmen I don't want to see in the crease is these two, man. Smith and Labuschagne just looks they're so good. They're not the prettiest to watch. They have ajeeb stances, and they do weird things with the bat, but they're so good and so chickered, man. They will never leave the pitch if they're settled. Yeah, I think West Indies तकिया और ब्लैंकेट लाके बैठ जाना पिच पे थोड़े कल के बाद 500 मार रहा है. Yeah, too much cricket for West Indies to take in. I think अच्छा learning experience भी है boys को, तो hopefully they'll be able to get something out of it tomorrow. But I mean, Labuschagne, Smith, that partnership. Yeah, they got the wicket of Warner early, but then after that, man, is just a tough day. Khwaja bhi acha khel raha tha. Unlucky, he'd be kicking himself for getting out. He could have also got 100. Now Smith is in line for 100. Labuschagne is in line for a double 100. But Marnus Labuschagne, man, I think this is passing on the baton, if you want to say, right? To Labuschagne. I think Labuschagne will be that next player in Australian cricket. You want him to perform in overseas conditions as well. And he has he had some, his first innings, I remember, was in the Ashes in England. When Smith got that concussion, he came in and he scored again. So, he has that in him. He can be a big match player. And, he loves playing with Steve Smith. They both, enjoy batting together. And they complement each other. I think they both, सबको दोनों एक को एक, motivate करते रहते हैं, keep reminding themselves. And, I think that partnership and chemistry, you get that one player या one partner तुम्हारा जो साथ non-strikers पे रहता है, तुम strike पे रहते, वो एक mental connect बहुत ज़रूरी है, I think, for them to, the way they've been playing, अब बेहतरीन दिख रहा है मेरे को तो. गुरनूर भाई बोल रहे ये बात अजीब लगेगी, बट T20 वर्ल्ड कप हर साल या 2 साल हो रहा है, इसमें मजा नहीं आता है. दैट्स ट्रू मैन, हर 2 साल हो रहा वो. एंड आई थिंक अगर आपको वर्ल्ड कप थोड़ा सा प्रेस्टिजियस करना है तो एवरी 4 इयर्स, अब जैसा वनडे वर्ल्ड कप एवरी 4 इयर्स होता है, वो थोड़ा ज्यादा प्रेस्टिजियस रहता है. इन फुटबॉल वर्ल्ड कप, बट आई थिंक ये ज्यादा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि डोमेस्टिक आईपीएल फॉर्मेट या जो भी बीबीएल हो, इतने चीज हो गए हैं आजकल. आई थिंक इतना 2020 अपने को दिखता है कि 2 साल छन बोल के साथ आ जाते हैं, ऐसा लगता है. बट 2 years for a T20 and 4 years for a 50, if you really think of it, it's enough. बट ये डोमेस्टिक क्रिकेट इतना ज्यादा हो गया, T20 के लीग्स प्लस अबू धाबी भी आजकल शुरू हो गया था. आई थिंक इसलिए भी अपने को ऐसा लगता है. सबको T20 लीग में मजा आता है. कि एक आइडिया देता हूँ जो मेरे हिसाब से माइंड ब्लोइंग है, कि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन T20 इंटरनेशनल्स की जगह हमें लीग्स कर देना चाहिए जैसा फुटबॉल में होता है. यही ऐसी होगा सर गुरनीत भाई, ऐसी होगा. आई थिंक इन द फ्यूचर लोग इस तरफ पे काम कर रहे हैं. बिकॉज अगर आप देख सकते हैं अभी जो इन्वेस्टमेंट हो रहा साउथ अफ्रीकन T20 लीग में, वहाँ पे इंडियन इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे भी कैपिटल, सनराइजर्स पूरे इन्वॉल्व है.
वेस्ट इंडीज में तो हाँ पहले से आ गया। अभी दुबई का जो लीग शुरू हो रहा IL T20 उसमें भी इंडियन इन्वेस्टमेंट है। यू हैव द अबू धाबी नाइट राइडर्स एंड द दुबई कैपिटल्स, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है। एंड ये जो लीग्स है साउथ अफ्रीकन और दुबई लीग दोनों एक टाइम पे इकट्ठे चलने वाले हैं जनवरी में, एक ही टाइम पे। तो पूरा लीग क्रिकेट ही चल रहा है एंड स्लोली स्लोली वैसे ही होगा। वेदर आई डू आई एग्री विद दैट, आई डोंट नो मैन, बिकॉज हम लोग लाइक क्रिकेट का अलग क्या रहता था, इंटरनेशनल ज्यादा फोकस था, हम एक्साइटेड रहते थे। But I guess if you look at it from a financial point of view, marketing point of view and everything, it makes sense. अगर आप T20 लीग्स करा रहे हैं साल के एंड फिर आप वर्ल्ड कप्स को खाली प्रेस्टिजियस रखो जैसा फुटबॉल में करते, that's a different way to look at it. It doesn't mean that it's a bad thing. People might enjoy it, we might enjoy it also, but हम लोग कैसे ट्रेडिशनलिस्ट है, we're used to one particular thing, चेंज हो गया तो परेशान होते, वैसे ही रहते। मगर I think with the new audience, Gen Z and all that, maybe this will work, these leagues, and but उसमें भी आपको क्या करना है मालूम, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड फैज इन, इवन गुरनीत भाई, इन हाउ यू प्रेजेंट दैट लीग। अब प्रीमियर लीग एंड थिंक इट वर्क्स ब्यूटीफुली, 8 महीने खेल रहे हैं, आपके पास इतने प्लेयर भी है, टीम्स भी है, 20 टीम है आपके पास, तो अच्छा चलता, कोई बोर नहीं होता। क्रिकेट में उतने है पर्सनल, आपको लाइक पूरा साल लीग खेलना, 8 महीने 7 महीने जो भी है, do you have that many teams that you can do that, and do you have one league? Because फुटबॉल में आपके पास खाली प्रीमियर लीग है, मे बी अ लॉट ऑफ पीपल वॉच प्रीमियर लीग में, उसमें इटालियन लीग भी है, स्पेनिश लीग है, डच लीग है, so do you have that those resources in cricket? Yeah, and I think cricket में सबसे बड़ी चीज ये भी है कि भाई मेजॉरिटी प्लेयर्स आई थिंक या तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, या मैक्सिमम अगर डीप गया तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान तक मिलेंगे। आई मीन यू वोंट फाइंड इट ईच कंट्री एंड स्टफ लाइक दैट। द थिंग टू मेक अ 20 You will टीम लीग find, but then that's the thing, right? कि उसके बाद like 10 12 15 nations, उससे ज्यादा नहीं है। एग्जैक्टली अभी यही 12 नेशन 10 नेशन ही यहाँ पे अभी भी क्रिकेट में। अगर अब आप देखो लाइक अभी स्टिल यूएस कमिंग, सऊदी कमिंग, ओमान कमिंग, a lot of people are coming, but it just be too one sided then. So I mean it will have to, like you said, it just have to be very systematized and very very well thought through before they actually initiate it. Yeah, no, let's see. I think it is heading that way. So it's just that how do you implement it? How do you make sure it's successful? That will be up to the organizers, because you have to be a bit careful in how you plan it, and to keep the to keep the audience engaged in that league or whatever it is. You have to be a bit more careful. From that Australia West Indies game, you mentioned Khwaja. You're happy with his performance? Yeah, man. And Khwaja, typical Khwaja, finding the gaps, playing his innings, going about his business. I think Khwaja is unfortunate to get out. Maybe I was expecting a century from him, but अच्छा खासा wicket दे दिया. But yeah, apart from that, I mean, Kyle Myers भी मेरा fantasy pick था, तो Kyle Myers भी एक wicket ले लिया. Straight away he came on and picked up the wicket. Yeah. Very good shaping away. And it was a very good delivery. Khwaja का ही wicket लिया उन्हें, right? I was shaping away from the left-hander. Yeah. उसके बाद फिर पूरी वेस्ट इंडीज की टीम शेप आउट हो गई बेचारे। Yeah, after that it was a tough day, long day in the sun for the West Indies. Let's see what happens. Hopefully they fight back, and I'm excited to see Chandra Paul play, Chandra Paul Junior play. Let's see what happens. उन्हें कैसा बैटिंग करने वाला है. I am excited for that. And yeah, one more game is going on right now, bro. If you remember, it's Sri Lanka versus Afghanistan. Ibrahim Zadran, he's in your eye test also. 160 what? 162. Second century of the series for him. Yeah, man, that was an outstanding innings. 15 fours, 4 sixes. Zabardast khel raha tha. He played well against the spinners and the fast bowlers. But right now, Sri Lanka off to a flyer, man. 101 for 0 and 17.5. They can chase this down if they continue to bat like this. But their openers, Nisanka and Mendes, Mendes 67 or 59, Nisanka 30 or 47. So, अच्छा चल रहा है अभी. But one thing that I would like to point out here about Afghanistan is, if you see over the months only, I mean few months each हुए T20 को, तो मंथ भी नहीं हुआ, but उन लोगों का जिस तरीके से टॉप ऑर्डर स्ट्रक्चर हो गया, टॉप ऑर्डर is now performing, ideally अभी क्या आता था, एक आध बंदा used to do it and then used to get मार के 200 तक आते थे. But now if you see, if Ibrahim Sardan है, रहमत शाह है, Najbullah है, these guys are waiting, Gurbaz है, so I mean these guys are the ones अभी अच्छा खेल रहा है. I mean, and as a unit, can this contribute?
सब contribute कर रहे हैं and they're doing really well. That's a very good point, Faz, man. Like all their batsmen are contributing. एक पे depend नहीं हो रहे. कभी कभी आके पे नबी और राशिद मार देना, वैसा वैसा नहीं चल रहा. Like सब टॉप से कोई ना कोई contribute कर रहा या है. एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जब आपकी अपर 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 डेक परफॉर्म करती तो देन बीच एंड लोअर डेक, मतलब लोअर डेक तो छोड़ दो, बीच की जो 4 5 6 होते हैं या 5 6 7, दे विल बी अ लिटिल बिट मोर ईज्ड अप, दे कैन कम एंड सॉर्ट ऑफ टेक अ रिस्किंग शॉट ये वो. लेकिन वेरी क्रेडिट टू इब्राहिम सरदार इनिंग्स मैन, रियली ब्यूटीफुल 162 आई थिंक, बहुत बहुत जबरदस्त. Yeah. Good job and keep it up, brothers. Thank you, sir. Gurneer Saini, Gurnoor bhai, sorry. Thank you so much. Really appreciate it. And thank you for joining us today. Bahut maza aaya. Sumesh Bansal Singh, brothers, share your football channel. We will support that too. Chasing Green Arrows. So it's the same chase under the Chasing brand. Chasing Green Arrows is the football channel. Over there, we have two journalists from England, Dean Jones and Gianni Batiste, who host the show, and they come on twice a week. So, please support our channel there, and Yes. you can follow us on Twitter, Instagram, and stuff as well. So, thank you so Hopefully, much. hopefully for chasing the target also, we will be, during the IPL भी World Cup में लोग fantasy खेलते हैं, तो we'll be giving out picks and potential, हम लोग stats भी discuss करेंगे कि कौन सा pick आपको पाएंगे. well, fantasy से क्या होता है, मजा आता है गेम में खेलने, इंटरेस्ट आ जाता है कि भाई आपकी एक टीम खुद की बनती है, एंड देन यू सॉर्ट ऑफ सी देम प्ले लाइव, एंड अगर मारा तो आपको पॉइंट्स है, नहीं मारा तो बैड डे इन द ऑफिस को, वैसा एक अच्छा experience add on होता है with the fantasy. So hopefully we'll be starting that here as well. Yeah, love you from Punjab, India. क्या बात है, कितने पाई की हाल चाल. मैं देखो पंजाबी नहीं आती मुझे ना, मैं पंजाब को, मैं हैदराबाद का हूँ, लेकिन मैं पंजाब में रहता था. मगर वो पंजाब नहीं जो इंडिया में है, वो पंजाब जो कनाडा में है, ब्रैम्पटन द विच. भाई तो मेरे काफी दोस्त है पंजाबी, चंडीगढ़ से, अमृतसर से, कहाँ कहाँ की, लाइक आप कहाँ, होशियारपुर, वहां से भी मेरे दोस्त है. तो मिलते हैं सर. मुझे इंडिया पंजाब आना, मैं कभी एक्चुअल पंजाब नहीं आया, मैं दूसरा पंजाब में मैं भी नहीं रहता आया था अनफॉर्चुनेटली. में. तो मुझे खाना खाना है, कुलचे खाना है, पराठे खाने हैं, बटर चिकन खाना है. तो रियली एक्साइटेड टू विजिट अभी ये पंजाब. चैनल चेसिंग द फूड हो गया शायद ये चैनल. Arey, it's always good to talk everything, and yeah, man, I really want to go to Punjab and over the I spent like 10 years in Canada, तो वहाँ पे तो like काफी पंजाबी पंजाब, या सुने ऑफ कोर्स. और कल्चर देखे, और जो भी दोस्त लोग थे. अरे देखो, हर एक पंजाबी आ गया. अरे रीजन रे रे. ये भी पंजाब का है. मिस्टर डडवाल, व्हाट्स अप ब्रो. तो आशीष ये भाई, तुम कहीं को बैठे हुए कनाडा में, वीजा दिलाओ यार. आशीष भाई वही है, मिनी मिनी पंजाब में ही छे उधर कनाडा में. So yeah, man. Hopefully we make a trip there soon. North India. But yeah, Fez, it's time for fresh off the press, buddy. There's some news that I gotta share with you, bro. पाकिस्तान से ताजा ताजा खबर. There is a bug or a virus in the England team. भाई 6-7 प्लेयर, 6-7 स्टाफ भी, मतलब 14-15 लोग को कुछ बग आ गया. अब उन लोग फूड पॉइजनिंग नहीं पड़ रहे बिकॉज खुद का शेफ लेके गए. तो आई डोंट नो क्या है वो बग, कौन सा वायरल है. अब होता है लाइक हम लोग भी, जब मैं जाता हूँ इंडिया को, मेरे को भी वायरल होता, बग होता. अब ये खतरनाक बग है, 15 लोगों को लग गया. अब कल मैच है नहीं है वो तो बताओ मेरे को. कल पिच के बाद में एक खुड्डी डाल देना पड़ेगा शायद, ताकि कोई भी कुछ प्रॉब्लम अगर हो, he could run directly to the खुड्डी जरूर and बताएंगे. relieve चंडीगढ़ आए himself. तो राजगढ़ है, चंडीगढ़ में. हाँ बोलो, सॉरी. बट या आई मीन बेचारे क्या बोल सकते हैं, ये सब गोल खाओ, पियो और मैच खेलना पड़ेगा ही पड़ेगा, आप क्या ही कर सकते हैं. Bro, there is rumors that they might delay the game by a day. There is like strong rumors from journalists over there. Even I think Sky Sports had mentioned it, if I'm not mistaken. I don't want to misquote, but मैं देखा था कि they might extend it by a day because 6-7-8 प्लेयर को हो गए. खाली जो रूट और 3-4 प्लेयर थे, आज नेक्स्ट पे कोई थे ही नहीं. अच्छी चीज क्या है, ये अपने यंग बच्चा को ने रेहान के लिए कुछ फायदा हो गया शायद, ये he'll be able to debut his test. Yeah. But No, नहीं, I hopefully mean, they feel better. We अफसोस get की to see बात है, game और because हाँ, मतलब इतना अच्छा, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग स्टमक था टू विन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, तो खाने के अगेंस्ट और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. बट इट्स फनी कि शेफ भी उनका ही है यार, वो पूरी जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, पेट बदल गया. आप जो
नहीं, वो लोग बोल रहे फूड पॉइजन नहीं है, आई डोंट नो क्या है वो, बट मेरे को ही फूड आई थिंक पानी पॉइजन का लग भाई, रहा है। अपने को तो पानी का भी हो सकता है बस, लाइक अपने को भी होता मतलब था हाँ, लाइक, खाना पानी ही हो सकता है, और क्या हो सकता है? या और कुछ भी नहीं हो सकता। वायरस ऐसा क्या क्या कैमल फ्लू बोल के आ रहा है, सुनने में आ रहा है। आई डोंट थिंक I कैमल्स don't वहां know तो what है it is, but I पाकिस्तान में hope, भी। I'm laughing about it, but I hope they feel better and we get to see a Yeah. game as well. Like, and more than that, हाँ, get अच्छे hopefully, अच्छे अच्छे, हाँ दोनों स्क्वाड पे अच्छे हैं यार। यू डेफिनेटली वांट टू सी द फुल स्क्वाड एंड फुल थ्रॉटल yeah. cricket between both the teams. So hopefully praying for their speedy recovery, and जो भी है वॉशरूम में कर लो यार, खत्म करो। And speaking of the press, उसमें Joe Root आया था because of course Ben Stokes is one of the guys also who has the bug, so he didn't come, and Joe Root, he kind of like shrugged it off. He said, yeah, like there is a bit of a bug and everything, but we'll be okay from by tomorrow. That's what he mentioned, and he also said about captaincy. He shrugged that off. I don't think he's going to captain, but अब देखेंगे because वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर और खबर आई कि भाई और लोगों को हुआ एंड स्टफ, तो आई डोंट नो क्या होने वाला है। रात तक मालूम हो जाएगा। आई थिंक विल फाइंड आउट इन अ फ्यू आवर्स इफ देयर इज अ गेम ऑन टुमारो, अदर्स कल सुबह में पता चल जाएगा, बट होपफुली वी गेट टू सी सम क्रिकेट एंड आई होप इट्स नॉट लाइक अ फ्लैट ट्रैक। आई वांट टू सी सम स्पाइस, आई वांट टू सी सम टर्न, if not fast bowling, at least spin bowling, get to see some wickets early on, and सीरियसली। नहीं, इट्स like एक्साइटिंग बिकॉज़ आई मीन अभी बेचारा मार्कवुड तो नहीं है, बट लाइक फ्रॉम पाकिस्तान के जो पेसर्स है, आई मीन हमेशा अच्छा दिखता है उन लोगों को भी बॉलिंग करते हुए। यू हैव लाइक अमेजिंग पेस इन देम, एंड इंग्लैंड के भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट व्हाटएवर दे हैव, इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग वॉच। बाबर का सो नहीं आएगा अब। आशीष आशीष भाई भाई, बोल बाबर भाई इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर राइट नाउ। आई थिंक आएगा, उसको भी सो आ सकता है, हो सकता तो एक काम, जर्नलिस्ट है एक्चुअली, आई थिंक रिजवान साहब है नाम उनका। मैं उनको फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे भी। तो उनका क्वेश्चन था, सवाल बाबर आजम को, राइट? तो उनका सवाल जो था, इट वाज अ गुड सवाल ही, बट लंबा था, मतलब 1.5 मिनट का सवाल था, बट ही वाज बेसिकली सेइंग दैट कि भाई आप है। फ्लैट पिचेस बाबर बनाए। हाँ, अच्छा, हाँ, सॉरी सॉरी, गो अहेड। हाँ, सॉरी सॉरी। नहीं, नो, इज जस्ट सेइंग कि फ्लैट पिचेस बनाए आप पाकिस्तान में, और उसमें डीमेरिट भी ठुक गया था आप पे, ऐसा बोला ना, ठुक गया था डीमेरिट भी, मतलब खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे कि ये हो गया था, एंड फिर रिजल्ट भी नहीं आया, हार गए भी वो सीरीज। तो अभी कैसे कराएंगे पिचेस को, एंटरटेनिंग कराएंगे, स्पाइस डालेंगे उसमें, फेवर कराएंगे मतलब आपके प्लेयर को। बेसिकली व्हाट वी वर सेइंग कि भाई टर्निंग या विकेट्स लगाओ और इंग्लैंड को प्रेशर में डालो, दैट्स व्हाट वी वर सेइंग, राइट? He's saying that, and then after that Babar like sarcastically said कि like he didn't say in a rude way, but he said कि हो गया क्या आपका, like और कुछ बोलना है क्या तो बोल दो। तो it wasn't like he didn't say rudely or anything like that, but like इसलिए थोड़ा जैसे कि trending था, जो, but then हाँ, explained, जो he explained himself। Babar said कि नहीं देखो, और कुछ रमीज राजा के बारे में था about chairman and everything, तो he said देखो ठीक है वैसा हुआ था डीमेरिट का ये वो, बट वी स्टिल बैक आवर स्ट्रेंथ्स, एंड जो भी पिच आएगा हम लोग खेलेंगे, एंड फिर रमीज राजा हमारे चेयरमैन है, हम उनको हमको बैक करते तो हम भी सपोर्ट करते हैं एंड ऑल दैट। तो उसमें थोड़ा सा था लाइक थिंग, बट इट वाजंट दैट हॉस्टाइल, बट दैट्स व्हाट वाज ट्रेंडिंग बेसिकली। हाँ, 1.5 मिनट का सवाल बोलता है, I can really understand his response to that, but like स्पाइस अप तो विकेट नहीं हुई, स्पाइस अप इंग्लैंड का पेट हो गया, वो अलग बात है। नहीं नहीं, आपकी चैट आ रही भाई, हम बस दूसरा डिस्कस कर रहे थे। जो टीम वर्ल्ड कप में जीते वो आईपीएल को होस्ट करे, तरह दुनिया में जाए आईपीएल एज द बिगेस्ट लीग, प्रीमियर लीग और बाकी लीग्स भी पुश करें। अब वो यही है कि भाई जो इंडिया में क्राउड आती है वो बाकी देशों में नहीं आ सकती, जो आप देखते पैक स्टेडियम्स आईपीएल में। आप देख चुके हैं दुबई में भी आईपीएल, साउथ अफ्रीका में भी आईपीएल, अगर आप अमेरिका कनाडा में भी रखे ठीक है लोग आएंगे, वैसा नहीं है, लेकिन जो इंडिया में वो बेस बना, अगर जुनून, आप हाँ, वो जुनून भी और नहीं जो है पहला होता लोगों सीजन को। से हम जो देख रहे हैं, राइट, आईपीएल में जो पैक स्टेडियम्स, आरसीबी फैंस, केकेआर फैंस, ये वो इंडिया ही में मिलता। जो क्रेज है क्रिकेट का कहीं भी नहीं है, एंड पॉपुलेशन भी एग्जैक्टली, उतना है, राइट, टू बैक दैट आल्सो यू हैव पीपल। लोग बोलते हैं भाई या काम वाम जब भी ये देख लेंगे, क्रिकेट पहले, दैट्स हाउ इट इज। सो बाहर, हाँ, और बाहर तो ये हो जाता है कि भाई आपको पूरी प्लानिंग करना पड़ता है, डब्बे लगाने पड़ते हैं, इतने दूर दूर रास्ते हैं, इतने दूर दूर या सब रहता है, आई आई मीन एंड जॉब्स अंडरस्टैंड। भी ऐसे। या हाँ, आई अंडरस्टैंड उन्होंने क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि लाइक आपकी एनआरआई कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन से बहुत बड़ी है, लाइक नॉर्थ अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, हर जगह है। तो एंड यू वांट टू ग्रो द गेम, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, बट होस्टिंग एन आईपीएल राइट नाउ, आई डोंट नो, मे बी आगे जाके यू कैन हैव अ फ्यू गेम्स, सो व्हाई नॉट हैव like a best of 3 match or something in North America, like between India Pakistan, or between like RCB and Lahore Qalandars. That would be cool. I hope I will be interesting to do that if they can do that.
इंडिया वाले उधर पहुंच जाएंगे आईपीएल की। नहीं, सही बात है, लाइक जुनून बहुत है, मगर वो वाली फीलिंग नहीं आती जो क्राउड एटमोसफियर आता, वो अलग ही रहता। आशीष बोल रहे इंग्लैंड के फूड में प्रोटीन की कमी थी, गिफ्ट टिप्स। प्रोटीन की कमी तो नहीं होगी, आई थिंक पॉटी की बहुत ज्यादा कमी हो रही थी, तो पॉटी हो गई उन लोगों को। बट आई फील यार खाने का क्या ही टिप दूंगा, आप आइए, मैं 1-on-1 चैट करेंगे अपन, तो पूरी नहीं, डाइट बना के दूंगा। उन लोग को आई थिंक ज्यादा प्रोटीन हो गया। आई डोंट नो व्हाट इट इज, क्या हुआ एग्जैक्टली वो तो उन लोग बोल सकते हैं, बिकॉज पूरा खबर नहीं आ रही कि एग्जैक्टली क्या नहीं, था। बट वही है ना, फनी थिंग इज एक्चुअली इट इज अ कॉस्ट ऑफ लाइक थिंकिंग कि भाई इफ दे टुक देयर शेफ, दे टुक देयर होल थिंग, उसके बावजूद क्या हुआ होगा, मगर you know, वहां which पे is the लाइक या मसाले इट्स वसाले वहां के या होंगे नहीं। नहीं, बट मसाले नहीं होंगे ना, बिकॉज आपका शेफ ही खाना बनेगा, सो ही नो व्हाट यू गाइस वांट। तो तो आई थिंक वही मगर होगा कि चिकन विकन, पानी एंड यस एटमॉस्फेयर वही चिकन एनवायरनमेंट ये विकन वो। पानी पूरा वहीं का ही है, लोकल ही है, राइट? वो शेफ वहां से नहीं उठा सकता चिकन। आई डोंट थिंक ही गॉट द चिकन फ्रॉम देयर। सो वो रहता है, लाइक इट हैपेंस। हम लोग भी जब जाते हैं इंडिया, तब वो हो जाता, बग हो जाता। सो इट्स ओके, बट होपफुली दे गेट बेटर एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट या, if it's a full game, full squad, if Ben Stokes plays, फिर मजा तो आएगा, because Livingston also I'm hearing he might get a debut, and him in Test cricket is going to be so exciting, bro. उन्हें तो खाली मारते रहेंगे. Also watch out for Will Jacks. He's a या guy who hits, but he's a spin bowling all rounder. He bowls a bit of spin, but also he's a very aggressive batsman. खाली आके ठोक देता है. In the warm up game in Abu Dhabi, he scored 60 of 30, I think. So watch out for him. Let's see what he has to bring. But I'm looking forward to also from the Pakistan side, right? आई थिंक तो या द बेस्ट थिंग वुड बी, अगर इन लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, जस्ट टेक दैट एक्स्ट्रा डे मैन। आई डोंट वांट लाइक पूरा एक अच्छा मैच देखने को मिलना चाहिए, आई पूरे थिंक। प्लेयरों के वरना साथ बेसिकली, राइट? एग्जैक्टली, वरना वो आधा अधूरा रहता, अरे वो नहीं था, अरे ये नहीं था, वो ब्रैगिंग राइट्स भी नहीं मिलते, बराबर मजा नहीं आता देखने। नहीं, 100%. And anything else you want to add? Any news that you heard? Nothing, I heard nothing. All I know is 11 o'clock आज मुस्तफा भाई का स्ट्रेस बढ़े हुआ रहेगा, आई मीन अपने इंडिया के 12:30 बजे। तो आई होप आप लोग प्लीज मुस्तफा भाई के लिए दुआ करिए, इनकी टीम सऊदी अरेबिया खेलने वाली है। तो Yeah, वर्ल्ड कप चल रहा baby. है, we'll be doing discussing something on the World Cup as well, but let's see, अभी के लिए तो Yeah, of course, टेंशन था। man. All right, you can catch us on our Twitters, Musti Machine Fest Tahir. You can catch us on Twitter, Instagram, everywhere, and we'll get you the latest from all the tournaments, all the sports. But here on Chasing the Target, कल बात करेंगे फिर और cricket बात करेंगे. It's day Yes 2, sir। West Indies versus Australia, and then hopefully day 1, Pakistan England. We'll discuss that. We don't know exactly अब क्या होने वाला है. देखेंगे आज रात में या कल सुबह में पता चलता क्या होगा वहां पे। होपफुली बस दही खिचड़ी डालो, दही खिचड़ी में पेट साफ हो जाएगा। दही में शुगर। पंत को उर्वशी से मिलाओ, शायद फॉर्म आ जाए। उसको फॉर्म तो ब्रेक नहीं आई। उर्वशी नहीं, उसको लेके जाओ, उसको दुबई लेके आओ या गोवा लेके आओ। लेट हिम एंजॉय, रिलैक्स अ बिट बीच पे, थोड़ा सा खुला रहने दो, एंड देन ही कैन आफ्टर दैट गेट इनटू प्रैक्टिस, प्ले सम डोमेस्टिक क्रिकेट एंड कम बैक। आई थिंक ही I think yeah, a break, bro. and Big break. Ashish also has to come to, has to come here. I think wherever we are in Dubai, he has to come. I think sure, Get form के साथ साथ storm भी आ जाएगा। yeah, no, that was some great times. Hopefully we recreate them, and yeah, it's good times, man. Good times, good weather these days, huh, Fest? Oh, it's beautiful weather nippy अच्छा है. weather। We're enjoying, yeah. Also, अबू धाबी T20 लीग में क्या हो रहा है भाई? वहाँ पे सुरेश रैना खेल रहे, वहाँ पे आजम खान, मोइन शाकिब खान अल क्रिकेट, हाँ? अब Abu Dhabi T20 or the T10 you're talking about? अबू धाबी T10, सॉरी, नॉट T20. T10 वहाँ में तो पे I think सुरेश रैना खेल रहा है शाकिब लोग. भाई भी खेल रहे हैं, I think। साकिब भी खेल रहे, अच्छे प्लेयर ना, जाके देखना चाहिए. वी शुड गो वॉच. वी जस्ट नीड टू गेट बिट फ्री फ्रॉम वर्क, बिकॉज़ फुटबॉल भी है, बट इट्स अ गुड टूर्नामेंट मैन. सम क्वाइट अ फ्यू प्लेयर्स. अभी चल रहा बंगाल टाइगर्स का भाई. इफ़ी भाई कल मारे 80 of 30 balls. इफ्तिखार अहमद चाचू, he hit चाचू yesterday for the Bangla Tigers. He hit and he's batting right now actually. 45 for 3 score hai, but yesterday he hit 80 of 30, I think, bro. He smashed it in Abu Dhabi. So and it's pretty neck and neck. I mean, I think the team Abu Dhabi is on 7 point, बाकी सब 6 पे, but next 3 people are like on 6, so it's a pretty neck and neck competition देखेंगे. I mean, hopefully we'll try to get more on this, and yeah, we'll go cover it, brother. Some quality players इसमें हसनैन ने, डेविड विसे, ओडिन स्मिथ, इफ्तिखार अहमद, एवन लुइस, जो क्लार्क, कॉलिन मनरो, बेन कटिंग, शाकिब जैसा आप बोले, काफी प्लेयर है. मोहम्मद आमिर भी है.
So Yeah, I yeah, man. think yeah, we'll definitely get more information on this and sort of बात करेंगे इस पे भी अपन T10 लीग Yeah, क्या बात है, बात करेंगे धनाधन। 10 ओवर Yeah, का और लीग यार सोचे 10 ओवर कितना क्रेजी नहीं होगा हार्डबॉल क्रिकेट का देखें 10 ओवर का लीग आई मीन अपन यहाँ पे घर के नीचे तो एक टेप बॉल के साथ खेलते थे मगर 10 ओवर उसमें बैटिंग कम कर देना, प्लेयर कम कम कर देना, 11 प्लेयर खिला रहे हैं। हाँ, आई फील बैड फॉर द बैट्समैन हु वर पैरेड एट 5-6, बैटिंग ही नहीं आएंगी 10 ओवर में, क्या आती है बैटिंग? हाँ, नहीं आ भी सकती है अगर क्लैप्स आ बोल भी सकते सकती, मगर बहुत कम चांसेस है। अब वो रिस्क है अब क्या नहीं तो फाइव फील्डर्स एंड टू फाइव 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 ऑन ऑन फाइव फाइव कर कर देना देना, उसका या फाइव ऑन फाइव समथिंग कर लाइक देना सेम थिंग लाइक दैट दैट, समथिंग लाइक दैट। और भैया क्या काम करते हो यूट्यूब के अलावा? भाई आप मिलो पंजाब में, हम आएंगे, बताएंगे आपको। मिस्टर गुन्नूर ब्रो, वो काम है, बहुत काम है, कैसा बोलता है पैसो डायलॉग? काम आए बहुत काम आए एक तो भी गाड़ी देखो भाई होपफुली गुरनूर भाई हम पंजाब आएंगे काम आप दिला दीजिए हमें अब यूट्यूब के अलावा तो कुछ काम बेरोजगार बच्चे हम लोग बट इंशाल्लाह वी गोना डेफिनेटली इंडिया आईपीएल वर्ल्ड कप बहुत सी चीजें आने वाले हैं तो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड टू अस होपफुली वी कैन गेट यू गुड कंटेंट या नो 100%। गुरनूर भाई, वी विल टॉक। भाई सबकी बैटिंग आती है, 140 मार रहे हैं 10 ओवर में। ये मुश्किल है। 140 भी मार रहे, बैटिंग भी मिल रही, कैसा है ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। आई थिंक सब आउट भी हो जा रहे हैं, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट या 10 ओवर्स में थोड़ा कम रहता। Raina took a blinder the other day. Yes, Ashish, I saw that, man. That's what I'm saying. Raina is playing and he's playing well, bro, over there in the league, and good to see him. And hopefully, we get to see more Indian cricketers as well play these leagues. It's a lot of fun, of and course that's more crowd will come as well to watch them. But that pretty much wraps it up, guys. We've got a busy day ahead after this, but make sure you guys like and subscribe. Thank you so much, Ashish, Gurnoor, and also our sports and brothers entertainment Sumesh Bansal and Social Sports and Entertainment for joining us. Thank you for your comments, for your questions. We really appreciate it. We're a new channel. Congratulations to everyone, to our boss Ashish and our boss Abrar, who have, we're celebrating 100 subscribers today. It's just the start, but each milestone is a big milestone. So we'll take it as it goes. Thank you so much for joining us. Make sure, like I said, like and subscribe, and जो भी comments है आप डालते जाइए. Even when we're not live, you can contact us on Twitter, Instagram, ask your Instagram yeah questions, we'll reply to you. And if there's anything else you'd like to add, sir? nothing else sir you've added everything all the spice all the salt all the sweet you're the chef and it's time to cook it and serve it hot Big day tonight. Come on, let's go, boys. Come on, enjoy the football, boys, and we will catch you tomorrow with all the cricketing action. Take care, Fez. Take care, Ashish. Take care, Gulnoor bhai. Take care, everybody. Have a good night and sleep well, and enjoy the rest of your day.